cameras so that we can have Deedar. उनको देखेंगे. Thank you, Kalpana ji. So, Thank you. Oh, this I is think different Kalpana. this is not Kalpana I from, thought not our Kalpana Prasad. Yeah. Kalpana Prasad, yes. Okay. Okay. So, good evening, friends. Welcome to our weekly Guftagu. I can see some new faces, so I will have to do some bit of recap for them as to what this is all about. क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम लोग. So it will be first and foremost, I will be speaking with you in both Hindi and English alternatively. I mean, as and when wherever I am comfortable. जहाँ जहाँ ठीक लगे वहाँ पे हिंदी हो जाती है. So bear with me on that front. तो आपको झेलना है. So this is an event where we actually दिल खोल के हम लोग जो बात करना चाहेंगे, we all can do that, because we've considered seniors today as a great platform which enables us and allows us to freely communicate, as this is a very, very, very safe space for communication. यहाँ पे आप अपना दुख दर्द भी बांट सकते हैं, खुशियाँ भी बांट सकते हैं. एंड ऐसा है कि दिस इज स्लोली बिकमिंग ए वन लार्ज फैमिली. तो ये बड़ा अच्छा लगता है हमको कि व्हेन वी रीच वसुधैव कुटुंबकम इज अनदर लेवल. इधर तो हम लोग अपना सीनियर्स टुडे का फैमिली पहले बना लेते हैं. वी हैव गॉट मेनी स्मॉल फैमिलीज, एंड देन it feels great to be amongst all the people. So I have been running this session for a while now, every Tuesday, and it's enjoyable, at least for me, and the feedback also seems to be nice when people participate, because we target only 1 hour and invariably we have gone for 1.5 hours. So in the bargain, what we also do is indirectly we are punishing the organizers for a half an hour more. But they are very kind. I must say both Archana and Firoz are extremely kind and cooperative, and they want that I say sessions go and people benefit out of that. So we have been having a lot of discussions. When I say that it's a free forum for discussion, we also give it a semblance of structure. उसको हम लोग एक some kind of structure देते हैं, so that we are in and around a topic. So last few weeks we have been having different topics. Every time we have had, there was only once we had part 1 and part 2 when we said celebrations, festivals. We had 2 rounds because not everybody could speak on that day. So both the days it was enjoyable. Now this time I will give the full credit to Mr. Raman. He has suggested this particular topic of problem solving. जिंदगी में सबको बहुत सारे मकसद आते रहते हैं, challenges आते रहते हैं. We have spoken about certain challenges also in the past, but what Mr. Raman was saying, that there are different kinds of problems, and how each one has tackled that problem. जब कभी भी हमारे सामने कोई मसला आया हो तो हमने क्या किया, how did we solve a problem. Problem यानी क्या है, what is the kind of problem. We can categorize a problem. प्रॉब्लम होती है तो कभी इट कुड बी पेन, कहीं दर्द हो रहा है, दैट इज अ प्रॉब्लम. फाइनेंशियल इज अ प्रॉब्लम, फाइनेंशियली यू आर इन ट्रबल, तभी आपको प्रॉब्लम होती है. फिर फिजिकल प्रॉब्लम्स एज आई सेड. देन दूसरे भी मेंटल प्रॉब्लम्स भी आते हैं. बहुत सारे डिफरेंट वैरायटीज ऑफ प्रॉब्लम्स हैं. सो हाउ ईच वन वुड हैव एनकाउंटर्ड. हमारी ज़िंदगी में हमने कभी न कभी तो कुछ न कुछ मसला या मरहला होगा which आपने कैसे सॉल्व किया. This is exactly what we wanted to discuss in today's round. So since we have the सूत्रधार of the topic, Mr. Raman, मैं उनको ही I will request him to first talk about what he actually wants in this particular discussion, and we can go around that. So over to you, Raman sir. Very good evening once again. Thank you for suggesting this topic. In mind, that it is not easy to discuss my problems openly, right? Individual or problems we cannot discuss in public. Problems
or our private property, we have to deal with it as such. But even if the problem is mine, I can always discuss it in a general way, not indicating that this happened to me. It is not mine, not necessarily. So, and there are problems big and small. Very small problems are also interesting. There are health problems. There are certain minor ailments for which there is a homemade remedy which we do not know about. There are so many problems, big and small. And there are problems for which there are no solutions. You have to grin and bear it. Live with There are it. those kind of problems also. So how do you deal with a problem which obviously has no solution? That is a physical problem or a financial problem becomes an emotional problem, mental problem. You worry yourself to distraction. So whether it is possible to say somebody says something, gives you a kind of advice, simply because somebody is advising you, do we have the capacity to accept that advice and act on? Everything will pass. This too shall pass. This is most frequently stated maxim. Anything, it might pass. This might pass too. But do we have maturity to understand, to imbibe within ourselves the truth that this too shall pass? Has it happened? Or we have only hindsight, time will cure. Are you able to listen to Raman sir? Because he seems to be frozen. No, sir, network issue. Now we can listen. People Now to we discuss can- Yeah, he's back. the problem per se, not my problem, but problem as a general. Thank you. Yeah, okay. Thanks, Raman sir, for this brief introduction of what can be expected and what. But I'm also certain that we have a lot of issues that we would have encountered and we have resolved and we have moved on or we have accepted. So we have no option but to go with it. Can we choose our parents? No. If that is a problem, you have to live with it. So there are certain things that we will definitely live with, and but can you choose a boss? You can leave a job and find another boss. So these are things which are different for different scenarios and situations. Now let me share one of my personal problems, which is something which probably it can help others also. That is the reason I thought I will start the day after getting the brief summary from Raman synopsis. So I don't want to talk about Jahan problems. When you are going for buying a house, you will always not have the money, and you have to get money from here, there, everywhere, and then still manage it. वो प्रॉब्लम तो होता ही है घर बांधने के टाइम बिकॉज यू nobody sits with money so much. At least most of our people who are the middle class values. Rich people, it's a different thing. So, but health issues for 60 plus people is something which I would like to share about myself. It was, I think, 2019, 4 years ago. Uh, One fine day, I developed a very bad backache, hip on the backside, and it had become very stiff. It was very painful. And with that, I lifted my 1.5-year-old grandson, who was a little heavy also, and moved around and all. I didn't realize what I was getting into. And that pain was really excruciating. बहुत बहुत अजीब सा बहुत सारा दर्द हो रहा था. Then it from the hips it slowly moved to my left foot. पूरा दर्द होता था पैर में. यहाँ तक कि it would be like goosebump on one side, एक साइड पे पूरा you feel that blood circulation ठीक नहीं हो रहा है, दर्द हो रहा है. I can't walk more than 5 to 10 steps, and it was very tough.
डॉक्टर के पास चलना है तो भी यू हैव गॉट टू गो फॉर, इवन टू गो टू योर कार यू हैव गॉट टू वॉक सम डिस्टेंस, ये हालत था. एंड समहाउ फ्रॉम द मंथ ऑफ मे 19th इट वाज, वहाँ से लेके सितंबर तक आई वाज समहाउ मैनेजिंग. आई हैड टू गो पिक अप माय ग्रैंडसन फ्रॉम स्कूल, वो भी करते थे. चलते वक्त ऑल्सो थोड़ा देर चलो, फिर पैर को लेफ्ट फुट आई विल लिफ्ट एंड रेस्ट इट ऑन ए वॉल, and then afterwards after a few minutes I'll walk for some more steps. ये ऐसे करके करके स्कूल तक जाना, बच्चे को ले आना, इट वाज नॉट वेरी इजी. इसको कुछ तो करना था, हैड टू एक्ट. यू कैन नॉट लिव विथ सच अ पेन, ऐसे मुझे तो लगा. सो MRI and all those things, lot of money spent, and then it was very simple for them to say that okay L5 L6 कुछ तो अंग्रेजी में उसने बोला, slip disc. They concluded it was slip disc. So like it's a small procedure, and personally I am not in favor of going through these procedures and creating reflection errors. उसके बाद जो होती है साइड इफेक्ट्स उसके, यहाँ यहाँ अगर वो लोग, दिस इज लाइक यहाँ पे खून बह रहा है तो उसको बंद कर दो, बट यू आर नॉट एक्चुअली लुकिंग एट द रूट कॉज, जो एक्चुअल कॉज है इसका, उसको एड्रेस करना है. सो दैट विच ओनली सम एलोपैथी कांट हेल्प इट, दे कैन प्रॉब्ली डू ए सर्जरी, फिर तुम ठीक हो जाओगे 2 हफ्ते में, देन उसके बाद फिर और कुछ स्टार्ट हो सकता है, बिकॉज दे हैव एक्चुअली टैम्पर्ड विथ योर बॉडी. तो विद दैट पेन, नो पेन किलर्स वर्क, नथिंग. 3 महीने तो गुजर चुके हैं वैसे. So then they suggested the operation. So then I said, I'll take a second opinion, went to another doctor. So he said that yes, it is very clear that there is a case of slip disc. You need to go for a surgery. But you try out other things also. I mean, if you feel, you take 3 months within which if you can come out of it, please go ahead, do it. जो भी होगा आयुर्वेदिक, whatever, you try it out. So हमने बोला ठीक है. Then I was expressing this to my children. Of course, they all were seeing me struggle. So one of my daughter's relatives, उनका 80-year-old lady, she had multiple fractures. Because she was traveling by bus, that bus toppled, it fell, गिर गए थे, multiple fracture हो गया उनका, and she struggled. And when she was a little okay, a little bit of a movement was possible, so they went to a place called Jigni in Bangalore, S Vyasa, whatever that is called. It's a Ayurvedic, it's not, it's a natural therapy, a lot of things they do. So she spent some 2 weeks there, residential, and came back, and she was on a world tour after that within about a couple of months. Someone 80 plus has gone through that. तो हमने भी सोचा कि why not try, instead of going to this particular place or going through a surgery with some big hospital and then spend about 2.5, 3, 4 lakhs. तो मैंने सोचा कि इसमें भी कोई हर्जी नहीं है, let's try. So myself and my wife, both of us went for that. She was there for a very generic treatment. See, that place allows you to, it's like a resort. You can just be there for wellness. तो आपको सुबह से some activities you can do जो आपको लगता है for wellness. So they will suggest ये 8 चीज़ें आप करो दिन में. So we stayed for 2 full weeks. And I think there's a lot of cleansing they do, clearing up your system. वो काफ़ी अच्छी तरह से करते हैं. So the moment I started, it starts on a Friday and ends on a Thursday. So 2 weeks का हमने enroll किया था. And we went through, वहाँ पे अच्छा सा room दे दिया उन्होंने with all the comforts. Since it was November month of 8th of November we started, and it was very cold. We didn't need an AC or anything like that. So we went, and the very next day evening I felt कहाँ आके फंस गए यार, it is very painful, तकलीफदायक था. मैं बोला यार नहीं, I don't think I will continue here for another day. But I had already paid the money. I said okay, let me anyway show patience and go through it.
जेल लेता हूँ ये भी। दुखी था मैं, बहुत दुखी था। नथिंग वाज वर्किंग। सुबह 5:30 से दे स्टार्ट सेशंस। स्पेशल ये भी रहता है, स्पेशल टेक्निक्स फॉर डूइंग सर्टेन थिंग्स, स्ट्रेचिंग, बेंडिंग, एक्सरसाइजिंग। देन दे वर गिविंग यू मड थेरेपी, aqua थेरेपी, देन मैग्नेट थेरेपी, फिर उसको क्या बोलते हैं, पियर्स करते हैं उसको भी, आई फॉरगेट द नेम, Acupuncture. acupuncture, acupressure, both. They did a whole lot of things to me, and every day they would ask me, "How are you feeling today?" आज कैसे, because there was a session for review also. तो सुबह 10 बजे को लोग पूछते थे, तो हर रोज पूछते, साइकोलॉजिकली वन स्टार्ट्स फीलिंग कि अभी तो ठीक हूँ, बोलना बोलना चाहिए हमको। मैं बोला, मुझे बोलने के लिए मजबूर मत करो, आई एम नॉट डूइंग गुड, आई एम नॉट डूइंग गुड, अच्छा नहीं लगा, अच्छा नहीं, जस्ट वेंट ऑन लाइक दैट। देन फॉलोइंग सैटरडे, यानी एक हफ्ता मैंने झेल लिया, एंड एवरी डे देर वर सेशन स्टार्टिंग एट 5:30 इन द मॉर्निंग। वहाँ से लेके बहुत सारे सेशंस होते थे, एंड विथ ओपन माइंड कि ये ठीक होगा, दिमाग में लेके मैं गया था वो। एंड सैटरडे, sorry, Friday night we got to know that our son was going to perform on stage. So हम लोग ने एक दिन का टाइम लिया। सैटरडे वी सेड दैट वी विल गो इन द मॉर्निंग and come back on Sunday. So उनसे permission लेके we went, and I was still in pain. And I started on Friday, the following Saturday, and 8 days are over, ninth day, I was still in pain. I went, could not really enjoy the program, the stage show and all. Then Sunday morning we came back to same place in Jigni, which is about 40 kilometers away from the city, outskirts पे है। एंड सैटरडे भी ऐसे ही निकल, संडे के दिन इवनिंग में आई वॉज नॉट अलाउड टू टेक टी और कॉफ़ी और एनीथिंग, एंड देन वी, माय वाइफ वांटेड टू हैव कॉफ़ी, सो वी वेंट। सो एंड कॉफ़ी के लिए थोड़ा लंबा चलना पड़ता है। सो वी वॉकड, and then we walked, she had coffee, then we returned. At that time I asked her, did you notice something? She said, what? I said, I walked continuously, I didn't stop, I didn't wait, कहीं पे रुका नहीं। तो it was like a surprise कि अरे अभी दर्द कहाँ चला गया, I could walk the full distance, which was at least about half a kilometer, and then I came back also, same half kilometer. I said, this is amazing यार, जो भी हुआ, it was like a magic, like it just vanished. What a, तो मैग्नेटिक थेरेपी भी था, बहुत सारा ट्रीटमेंट था, बहुत सारा एक्सरसाइजेस था। And then after that, one of the things I decided that I should lose weight. I was weighing 110 at that time. So at that, with very disciplined life, from 2020 January, and COVID also in one way helped me, so that there was no outing or nothing, no travels, nothing. So in the 6 months time between January and June, I lost more than 20 kilos. That really helped, because this was something, and उसके बाद से absolutely no problem. So now it is 2019 November I started, and today we are sitting on 2023 October. तो 4 साल हो गए हैं। I've had no pain of my same foot अभी तक। ठीक है, दूसरे कोई दर्द आते रहता है, I will not say that I am completely freed, but this was something which I thought I will share, if people perhaps may get benefit. उसके बाद भी whoever has gone to this particular place, my cousin also went, she was fighting breast cancer, she could not have lift her left hand more than this point. 1 week she spent there, and then she was pretty okay. This happened only a few months back. So this is a benefit I have gained from this particular Jigni, S. Vyasa is that particular place. It's a huge resort. Lot of nice things happen there. There is satsang, bhajan, it is that, everything is there वहाँ पे. So and they keep you occupied. ऐसा नहीं कि you just go and relax and sleep. No, you have the choice of sleeping also, skipping some sessions. But this helped. So I'm trying to share that something like this happened, and then this has helped. So in case people are having, I can guide you as to how to go through this particular thing. So this is my personal problem I have shared, how it was solved.
and today I'm still doing fine. So touch wood. Would like any questions you have, or any of you having any other thing to share, that would be wonderful. I would suggest that you can use that reaction button and raise your hand. Somebody had raised hand and वापस निकाल दिया. So go ahead. Okay, Jamila ji, Jayalakshmi ji, go ahead. Laksa, it was nice to hear your, story. It will help actually. And many of my friends have also gone to that place with some problem, and after coming out from there, they look very nice and fresh, and their problem is solved. For me, as if I go problems I have had in many ways, you know. Till one stage I was like, there was no problem, I didn't know what was problem. Afterwards I faced many problems, and coming to this, accidents. I was shooting, I started as in Kannada industry as a heroine. So during that time also I had faced lot of accidents. Like we had gone to a shooting to a village. So village में, some very village, it was a village story. So we were shooting inside. So it was like huts, no, all the tiles था वहाँ पे. So all, those days, now it's become very common. Every गली में होता है shooting, every place होता है. Nobody is even bothered to come and see. Those days shooting was something very, very private like. तो सब लोग आते थे और वो शूटिंग देखने के लिए आते थे. तो हम लोग वो एक छोटे से घर के अंदर शूटिंग हो रहा था. तो यहाँ पे लड़के लोग, ऑल दोस यंगस्टर्स, बॉयज एंड ऑल दैट, एंड मेन एंड ऑल, दे यूज्ड टू ऑन दैट वॉल्स. यहाँ पे सब थे. तो मैं क्या कर, मेरा शॉट हो गया. शॉट होने के बाद हम लोग बाहर आते हैं, क्योंकि बहुत अंदर, ऑल टेक्नीशियंस, दिस दैट एंड ऑल. सो शॉट होने के बाद हम लोग बाहर आते हैं. सो एज सून एज आई वाज कमिंग आउट आफ्टर माय शॉट, बाप रे, सो मच ऑफ, क्या क्या मेरे सिर के ऊपर गिर गया. आई जस्ट वॉज कमिंग आउट, क्योंकि वो लड़के लोग सब थे ना, वो टाइल्स में इसमें थे, वो सब डप 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 करके वो कर रहे थे, वो ऊपर थे. तो वो सब टाइल्स, पत्थर ईंट सब मेरे सिर पे. तो सेट कोलैप्स हुआ क्या? सेट कोलैप्स नहीं, वो एक झोंपड़ी जैसा घर था. और वो पत्थर जैसे रेड ब्रिक्स होते हैं ना, वो ब्रिक्स, वो टाइल्स. तो इट वाज ऑल वेरी नॉट वेरी वो पक्का नहीं था, सीमेंट नहीं था वो. तो ऐसे लगाया था फॉर जस्ट. तो मैं बाहर निकली टू बी कम आउट ऑफ द वो घर. सारा मेरे सिर पे गिर गया. मैं वहीं पे, आई जस्ट फेंटेड देयर एंड फेल. हाँ, some other artist and all, क्या हुआ, they started rubbing my head. My father also was there that time. तो ऐसा किया. We were staying outside. हम लोग बाहर ठहरे थे. We were not in Bangalore. हम लोग, myself and my father had come. So we were staying in some hotel. तो ये सब हो गया. Then, पता नहीं क्यों, anything happens to me, I just get up again. तो ये सब हो गया. मैं उठ गई. कैसा है, they gave me, that manager went and brought some, ये वो सब लाके दिए, दवाई सब. Then we stayed there for 1 or 2 days. रात में my father put some ointment, this and that and all that. फिर भी as soon as we came to Bangalore, my father took me to a doctor. हमारा जो फैमिली डॉक्टर है ना, कि ऐसा हुआ है, सिर में ऐसा हो गया है. देयर वाज वन गुरुराज राव इन मेजेस्टिक दोस डेज. सो उनके पास लेके गए. देन ही चेक्ड मी एंड ऑल दैट. देन ही टोल्ड मी, एनीवे नथिंग हैज हैपेंड, योर हेड इज स्ट्रॉन्गर देन द ब्रिक, ही टोल्ड मी. उसके बाद so many places when we used to shoot and all that, that was a big thing which happened those 70s. फिर this was in 70s. Okay. This happened during 70s. I was not yet married. It was 70s. My father had come. उसके बाद तो मेरा सब stop हो गया. बाद में when I had to re-enter again, I started with serials. वो जो serials होते हैं ना, उसमें शुरू हुआ. Then तब तो मोबाइल सब आ गया था. So somebody call आया, तो ब्रेक टाइम में मैंने क्या किया, वो मोबाइल लेके, I tell you, I get, I forget what is around me. तो मैं बात करके ऐसे आई.
बाहर आके धबार में गिर गई संप के अंदर। My God. संप के अंदर गिर गई। देयर वाज दैट संप वाज केप्ट ओपन फॉर क्लीनिंग। Oh. तो मैंने वो देखा नहीं। बाय द टाइम माई फादर हैड पास्ड अवे एंड ऑल दैट, मैं अकेली जाती थी। तो वो मैं गिर गई एंड एनीवेयर ऑल मैनेजर्स एंड ऑल केम, उन्होंने कुछ दवाई दिया, फिर से मैं उठी, देन शूटिंग हुआ। बट नेक्स्ट डे एंड ऑल दैट नीस में, ऐसे बार मैं नीस में बहुत गिरी हूँ। तो फिर से बट आई वेंट टू द जनरल डॉक्टर, उसके बाद सब मैं गई, दे गेव मी सम दिस थिंग बट नथिंग, यू नो, लाइक एक्सरे भी लिया, दे सेड ओके यू दिस थिंग इट विल हील। उसके बाद क्या हुआ, इन 2008 आई हैड अ मेजर एक्सीडेंट। वी हैड गॉन फॉर अ शूटिंग, या वी हैड गॉन फॉर अ शूटिंग, हम लोग ब्रह्मावर गए थे। तो ऑन आवर वे बैक, मैं गाड़ी में, देयर वाज सम आर्टिस्ट इन द फ्रंट, मैं पीछे थी, मेरे पास एक और आर्टिस्ट था एंड अनदर आर्टिस्ट वेयर, वी वर ट्रैवलिंग इन द नाइट। सो हम लोग, मेरा शूटिंग हो गया, तो मैं डायरेक्टर ने बोला यू वांट टू गो नाउ और यू वांट टू गो इन द मॉर्निंग। तो मैंने बोला नो, आई विल गो नाउ, मेरा तो हो गया है, मैं जाती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे दे वर स्टिल यंग दैट टाइम। सो मैं खाना वाना बनाना, उनका स्कूल जाना, कॉलेज जाना सब होता था। तो मैंने बोला एटलीस्ट आई डोंट हैव टू वेस्ट द टाइम इन द होटल। मैं वो गाड़ी में बैठ गई एंड आई डोंट नो लाइक सर क्या हो गया। वी हैड डिनर के बाद देर इज गार्ड सेक्शन एंड ऑल दैट, यू नो, गार्ड सेक्शन सब था, वहाँ से हम लोग ब्रह्मावर से आते हैं, मंगलोर से। तो दैट बॉय वाज, ही वाज अ कैब ड्राइवर, हमारा प्रोडक्शन का गाड़ी नहीं था। सो कैब ड्राइवर ने मेरे को बोला, जब खाने के टाइम में उसने बोला मैं ज़्यादा नहीं खाऊंगा क्योंकि मेरे को नींद आ जाएगी। मैंने बोला बाप रे, तुम सो मत, यू ईट लेस बिकॉज यू शुड ऑल्सो बी सेफ, वी शुड ऑल्सो बी सेफ लाइक। तो हम लोग ऐसे ऐसे आ रहे थे, पता नहीं मुझे कुछ भी मालूम नहीं हुआ। एक लड़की ने, अपूर्वा बोल के एक लड़की ने मुझे बोला, यू नो आई वाज एल्डर नो, सो शी वाज अ यंग गर्ल, अम्मा अम्मा गेट अप गेट अप। मैंने बोला क्या घर आ गया है, आई थॉट माई हाउस हैज कम। मैं उठी हूँ, हमारा गाड़ी उल्टा पुल्टा हो गया है। इट वॉज इन होसूर 2008, सो इट वॉज अपसाइड डाउन। मैं नीचे थी और सब लोग पेन में, ऑल आर स्क्रीमिंग इन पेन। वो गाड़ी, इट वॉज ऑल जैम्ड, वो गाड़ी का दरवाज़ा सब बंद हो गया था एंड यू नो सामने का वो जो ग्लासेस है ना, इट वॉज ऑल ब्रोकन, इट वॉज ऑल इन पीसेस। But you had seat belts on. मैं पीछे थी, देयर वॉज नो सीट बेल्ट। Oh God, okay. मैं पीछे थी, सामने का एक लड़का, यू नो, ही वाज देयर, ही वाज स्क्रीमिंग इन पेन। पीछे भी है ना सीट बेल्ट शायद, पता नहीं, पीछे देयर वाज नो सीट बेल्ट तब तो, दैट वाज इन 2008। तो यू नो एंड दैट गर्ल, एंड मेरे यहाँ से सब खून था, from my nose all khoon was coming and all that. My chashma was not there those days also, I used to wear chashma कुछ। then she told amma come, क्या हो गया के, no do come। मैं तो you know I was completely jammed like this, मैं कोने में थी, सब लोग मेरे ऊपर आके गिर गए थे, गाड़ी वाड़ी वो लगेज ये सब था। तो then she took me, no bus is stopping, it was at 4 o'clock in the morning, 3:30 or something, because accident case है ना, तो फंस जाएंगे करके कोई भी नहीं रोक रहे थे लैक्स सर, किसी ने भी रोका नहीं। तो हम लोग फाइनली दैट गर्ल, यू नो, हमारा बैग, पता नहीं दैट गर्ल, आई डोंट नो, आई हैव टू जस्ट यू नो डू मस्कारा, शी टुक वॉट एवर, जो पेमेंट हमको देते थे, हमको पेमेंट भी दिया था, वो पेमेंट को लेकर हमारा गाड़ी, मेरे चप्पल सब, मेरा वो बैग सब उठा के एक एक ऐसे रोक रही थी, किसी ने भी रोका नहीं। हाँ, किसी फाइनली 1 घंटे रुक के एक गाड़ी रुकी, तो हम लोग सब वहाँ पे एक होसूर में एक हॉस्पिटल है, मेन होसूर और पता नहीं, हासन सॉरी, इट वाज हासन, वो मेन रोड में एक हॉस्पिटल। तो हमको वहाँ ले गए, देन दे वर यू नो, कैन यू सी प्रॉपर्ली, दैट्स व्हाट दे वर सेइंग, आर यू फीलिंग गिडी, आर यू फीलिंग वॉमिटिंग, वो सिर में कुछ ये होने से वॉमिटिंग होता है, यू कांट सी एंड ऑल दैट। मैंने बोला मेरे को चश्मे के बगैर बराबर दिखता नहीं है करके। देन somebody went and brought my चश्मा, you won't believe the चश्मा, nothing happened to the चश्मा। हाँ, चश्मा था तो आई पुट द चश्मा, आई कुड सी वॉमिटिंग कुछ हो रहा है नहीं हो रहा है एंड ऑल दैट। देन बाद में दे गेव सम फर्स्ट एड एंड ऑल दैट।
पर मेरा हैंड वाज लाइक दिस ओनली. बाद में डायरेक्टर एंड ऑल वेर देयर इन द ब्रह्मावर. उन्होंने फोन किया, कुछ हुआ अम्मा इनके ये ना इतु ये नो आगोद बेड़ा एनी डॉक्टर किसी को भी हम लोग दिखाएंगे. हिज सिस्टर वाज अ डॉक्टर. तो बैंगलोर यू गो स्ट्रेट टू द डॉक्टर. वहाँ पे बैंगलोर में है करके शी डिड ऑल चेकअप दिस एंड दैट. But you won't believe, like sir, that you know what happened? The car was going in full speed because that cab driver had another pickup in the morning. He wanted to reach there and he wanted to take a Rash driving. rash driving हो गया था. सामने से एक लॉरी आ रही थी फास्ट. तो ये एंड ही वाज जस्ट एक विंग साइड में हो जाता है ना एक्सीडेंट, वो ऐसा हो गया. वो कार ऐसा वो लॉरी ऐसा आ गया, उसने एक टर्न मारा, दैट कार वेंट जस्ट रिवर्स्ड एंड उलट पलट के गिर गया. इफ यू सी द कार दे विल थिंक एवरीबॉडी इज गॉन. मैं उसी टाइम चली जाती थी. तो मैं बोलती हूँ जाने से भी परवाह नहीं, बट यू नेवर हाफ होके नहीं बचना चाहिए. by God's, पर 1 year I had to suffer. 1 year मेरे कान में one sound was coming. For 1 year I had to listen to that. I couldn't see, I couldn't hear any music. I couldn't see any, I couldn't hear to any TV, couch sound. मेरे को नहीं होता था. I couldn't face any sound. How did you resolve it then? उसके बाद में आई वेंट टू ऑल डॉक्टर्स. मेरे पिताजी एंड ऑल हैड पास्ड अवे, माय मदर आल्सो हैड पास्ड अवे. देन सम वो प्रोड्यूसर ने बहुत देखा मेरे को, तो ही सेड कितना भी हो, हेड स्कैनिंग ये स्कैनिंग वो सब किया मेरा एंड ऑल दैट, बट इट वाज नॉर्मल. By God's grace, it was normal. But then somebody said because of that impact of that sound, तुमको वो sound रहेगा. But and here मेरा fracture हो गया था left hand में. Right hand में अभी भी you have a swelling here for me here because of that fall, fracture, and I couldn't go. But still I had to go for shooting because I had to do the financial part also. हाँ, मैं ऐसे करके एंड दे यूज टू आई यूज टू गो फॉर शूटिंग एंड उन्होंने वो स्क्रिप्ट में कर दिया ये अम्मा को एक्सीडेंट हो गया है, सो आई हैड टू बेयर दैट. सो वो स्क्रिप्ट वेरी नेचुरली कमिंग देन. हाँ, वो हो गया. एंड देन फॉर 1 year के बाद दैट साउंड slowly stopped. So 1 year sound was going, and I could only sleep in one side. I couldn't sleep the other side. I couldn't even comb my hair. I couldn't even put my blouses and all that properly because my hands were not going back. So all this was a major thing, major accident 2008. उसके बाद भी मैं गिरी हूँ, like in some serials and all that. वो शादी का होता है ना, शादी का सेट पे वो कारपेट डालते हैं. तो you can trip on it. हाँ, वो कारपेट तो एक पीस नहीं होता है लैक्स सर, इट यूज्ड टू बी इन पीसेस. तो पता नहीं वो पता नहीं वो लोग टेप लगा के चिपकाते हैं एंड ऑल. इवन इन मैरिजेस वी हैव सीन. चिपकाते भी नहीं है वो, निकल जाता है ये. हाँ, तो बीच में ऐसा होता है. मेरा सैंडल वो कारपेट के अंदर घुस गया, ठप 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 जाके मैं वहां ढाड़ के गिर गई. अगेन आई गॉट नीस में ऐसा हुआ. तो ऑल दिस हैज हैपेंड 2-3 times हुआ. ऐसे बोलूंगी तो पूरा दिन हो जाएगा. तो ऐसा बहुत बार हुआ है. तो somehow God has saved me without anything major. Was the 2008 का एक्सीडेंट था, that was very major. But ऐसे कुछ nothing very serious has happened. So touch wood, I don't want to fall anymore, like sir. Yeah, don't fall. बहुत तकलीफ होगी. So take care of yourself. I think at 60 plus all of us will have to take care. Yes. It is all because of the good luck of your chashma. You were saved, no? Chashma goes into your eyes. Chashma was the lucky talisman there. It saved you. Sir, even recently when we went for SS, I went and banged myself on the wall, SS में हुआ था, and my chashma didn't break, thankfully. Otherwise, it would have gone into my eyes. So I intent on breaking your chashma this way or that way. चलो, thank you जय जी. And I always have hope. नहीं, कुछ नहीं होगा, मैं ठीक हो जाऊंगी. Good. You are a very positive person. Yeah. This is a very good thing. I never feel this is the end. नहीं, I'll become all right. That Great attitude. We really appreciate that attitude of yours. I will be fine. मैं फिर से चलूंगी, मैं फिर से एक्ट करूंगी, फिर से मैं गाना गाऊंगी, फिर से मैं डांस करूंगी. चलिए, अच्छा. Good that you are doing it and you are doing what you liking it. Yeah. So that is one thing in problem solving.
that having the utmost positive attitude. Yes. Yeah, never having a negative No. thinking. It gives you a lot of mental strength, And also and you are sometimes confident of facing. when you are sometimes ignorant, that also helps. You don't know how seriously ill you are, and you Yeah. think ठीक हो जाएगा, and then you come out of it. Chalo, Yeah. thanks a lot, Jayaji. Thank Let's Thank listen you. to somebody else, because Ramaji was there, but she had to leave in a hurry. She may join back after another call. Anyone else would like to talk about problem solving or any problem that you encountered, and what kind of problem and how it was tackled? I'm sure all of you have, if you can, संतोष जी आप बोलना चाहेंगी? ओके, एक्चुअली मेरे को इतने डिटेल्स में नहीं, आई मीन बिकॉज इंसिडेंट्स वगैरह ये बता रहे हैं आप लोग, तो आई थिंक इन शॉर्ट आई विल जस्ट से अबाउट वन ऑफ द इंसिडेंट्स व्हेन आई मीन आई वाज डूइंग एमए. तो हम जो है अपने लेक्चरर्स वगैरह के साथ में, हमारी जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है वो, उनकी वाइफ अमेरिकन थी, शी वाज आल्सो देयर. सो एंड परहैप्स प्रीवियस एंड फाइनल दोनों एमए के जो है वो लॉट था. तो हम एक पानी की टंकी करके होती, लक्ष्मण टंकी समथिंग, इन जयपुर की बात है ये. अच्छा. तो वहां हम गए थे, तो वहां पे ऐसे घूमते घूमते क्या है, एक इस तरीके का वो टीला होता है जहाँ मिट्टी होती है, एंड एक्चुअली कोई ग्रीनरी वगैरह नहीं होती, सपोर्ट नहीं होता है. सो आउट ऑफ जस्ट थ्रिल एंड एंथुसियाज्म एंड ऑल दैट, पहले हम लोगों ने क्लाइंब कर दिया, और उसके बाद में हम उतर रहे थे. तो मोस्ट ऑफ अस वर उतर रहे थे ऐसे बैठ करके स्लाइड कर रहे थे. ऑल ऑफ सडन क्या हुआ, आई सॉ समवन खड़े होकर के, अब वो आई डोंट नो वेदर वो शुरू से कर रहे थे, इतना सब कुछ मुझे नहीं डिटेल मालूम, लेकिन आई सॉ कि अच्छा ये खड़े होकर के वो उतर रही है. तो आई वाज इन मोशन, आई जस्ट गॉट अप एंड मैंने भी वही सोचा कि अच्छा करके, आई डोंट नो, मैंने तेज स्पीड में करना चाहा, रन करना चाहा, व्हाट आई एक्चुअली वांटेड टू डू, पर आई गॉट अप. जो स्लाइड करके हम जा रहे थे उससे उठी, और एकदम से जो है आई जस्ट फेल और करते हुए बस व्हाट आई रिमेम्बर इज कि जोर से नीचे कोई चट्टान वगैरह टाइप थी, सम स्टोन मतलब बड़ा था, एंड आई जस्ट फेल डाउन. एंड उसके बाद में द ओनली सेंटेंस वगैरह जो है मेरे को ध्यान है कि मेरे जो फ्रेंड्स वो करके, ओह आई थिंक शी हैज बिकम अनकॉन्शियस, एंड दे वर स्केयर्ड बिकॉज आई विल हैव टू बी टेकन टू देयर, एंड मतलब लोग बात. तो वो जो फियर, मतलब जो वो कुछ एक ही सेंटेंस मुझे ध्यान है कि आई थिंक ये अनकॉन्शियस हो गई है, और भी कुछ उन लोगों के बीच में बातचीत हुई होगी, एंड आई कैन अंडरस्टैंड कि अगर आप आपके ग्रुप में हो और कोई इस तरीके से हो जाए तो लोग बहुत डर जाएंगे. एंड देन आई रिमेम्बर दे मस्ट हैव टेकन मी, which way they took me and all that I don't know. Then I only remember कि I was in the lap of my that हमारी जो head of the department, उनकी wife जो कि अमेरिकन थी, so they were giving me treatment and I was in her lap and she said, so girl, you are still alive. so that is the only sentence I read, and somehow I was survived and all that. उसके बाद में क्या ट्रीटमेंट्स हुए वगैरह, आई हैव ए वेरी पुअर मेमोरी, सो डिटेल्स मुझे नहीं ध्यान. सो बट देन मींस दैट वे जो फिर जो, पर इतना मुझे ध्यान है कि उस जगह के मेरे सारे बाल निकल गए थे गुच्छे में करके, एंड फॉर सेवरल इयर्स आई हैड दैट पेन ऑन इन माय कनपट्टी जो कहते हैं ना, कान के पास बाल की जो जगह होती है वो करके. सो फॉर सेवरल इयर्स दैट पेन वाज देयर, बाल बिल्कुल चले गए थे उस जगह के. वन ऑफ द इंसिडेंट ये है शॉर्ट में. और दूसरा इंसिडेंट है कि मैं, मेरे हस्बैंड क्योंकि यहाँ पे ये उरण में थे मिस्टर पालीवाल, तो मैं लेक्चरर थी वहां पे उदयपुर में, लेकिन क्योंकि मेरी राजस्थान गवर्नमेंट की जॉब थी लेक्चरशिप की, सो विद इन राजस्थान ही हम लोग ट्रांसफर हम लोगों का हो सकता है. तो 1-1.5 साल ऐसे ही कंटिन्यू करके मैं विदाउट पे लीव लेकर के आ गई थी. एंड उसके बाद में जहाँ मेरे बच्चे पढ़ते थे, उरण में हम लोग थे, आपको मालूम होगा रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में जगह है. तो वहाँ उरण में जो उनकी प्रिंसिपल थी स्कूल की, वो शी हैड बीन कंटिन्यूअसली परसुएडिंग मी कि आप भी ज्वाइन कर लीजिए वगैरह वगैरह.
तो तब मैंने ज्वाइन किया था। तो एज ए टीचर मैं कुछ बच्चों को टेबल टेनिस के उसके लिए लेकर के गई थी, टूर्नामेंट के लिए लेकर के गई। सो व्हेन वी हैड गॉन, जिस समय हम, और यहाँ की तो बारिश वगैरह आपको मालूम है कि ऐसे अनप्रिडिक्टेबल वगैरह का होता है, तो उस दिन जब हम लोग गए तो मौसम वाज क्वाइट क्लियर एंड ऑल दैट, बट बाय द टाइम वी कुड फिनिश आवर टूर्नामेंट्स एंड ऑल दैट, एकदम से वो मौसम बादल का हुआ, ये हुआ, एंड इट स्टार्टेड रेनिंग। एंड बाय द टाइम हम लोग निकले होंगे, हमने अपने सब कुछ वो पैकअप वगैरह किया या ये किया, इट स्टार्टेड रेनिंग वेरी हैवीली। एंड इट, मतलब जैसे कहते हैं कैट्स एंड डॉग्स, इट वाज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। इट वाज सो हैवी रेन्स कि कुछ आपको दिखाई नहीं देता हमें। वी वर नॉट एबल टू गेट एनीथिंग, एनी व्हीकल एंड ऑल दैट। So along with the students, I was moving ahead, and it went on increasing and increasing. Again, जैसे ये बता रही हैं कि कोई एक तो दिख नहीं रहा था, तो कोई व्हीकल कोई स्टॉप नहीं कर रहा था, कुछ नहीं हो रहा था. We were not able to get any vehicle and all that. And with great difficulties, we had been proceeding. There was, उस समय मोबाइल्स वगैरह तो कुछ होते नहीं थे, तो we were searching for somewhere जहाँ से कि हम कांटेक्ट कर सकें टेलीफोन करके. वो सब भी नहीं है. सो इट वाज, आई मीन ये कह सकते हैं कि कुछ घंटों की जर्नी जो है वो ऐसा लग रही थी कि आई मीन आई डोंट नो, जैसे वर्षों की या डेज टुगेदर थी. वो दैट सॉर्ट ऑफ स्ट्रगल वाज गोइंग ऑन. एंड समहाउ करके फिर देन करते 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 कैसे हमने एक जगह से, बहुत लेट हो गया था रात में. एंड आई वाज वरीड कि माय प्रिंसिपल एंड ऑल दैट, दे वर, बिकॉज 4, 5, 6 जितनी भी थी, नंबर आई डोंट रिमेम्बर, बट सम स्टूडेंट्स वर देयर विद मी. तो समहाउ करके एक पेट्रोल पंप वगैरह आई थिंक ये था वहां, ये करके इट वाज लेट नाइट. एंड समहाउ आई कुड contact my principal in headmistress, and I told ऐसे ही टूटे फूटे शब्दों में जो कम्युनिकेशन हुआ कि इस तरह से ये करके. and now so somehow I got the vehicle and all that, and it was late night. इधर ये Mr. Paliwal, he was also contacting his school, and school was contacting. So it's all that and all that. So उसके बाद में somehow बहुत, I don't know, 1:30-2 कितने बजे पहुंच कर उन बच्चों को मैंने पहले पहुंचाया, ये सब वहां पे फिर पहुंच गए करके then I told him, then he came to pick me up, सब करके. So it was the whole night had gone almost with this thing. But then my headmistress, she thanked me so much कि तुमने इतनी हिम्मत रख के सब उन स्टूडेंट्स को अपनी जगह वगैरह पर पहुंचाए. तो ऐसे बहुत इंसिडेंट्स है, पर ये शॉर्ट में मैं आपको बता रही हूँ. So it was like this is a responsibility, na? When yeah, you are, it was a big responsibility. big responsibility. नहीं, थक भी गए थे, परेशान, जो सब कुछ था, लेकिन सबसे ज्यादा ये था कि आप क्या जवाब दोगे, कैसे ये बच्चे घर पे पहुंचे. Exactly. That was that. So these are the 2 incidents. Thank you, Santosh ji. It's always a pleasure to listen to you and your experiences. Now, Maninder ji बात करना चाहती थी. Please go ahead. बयान करिए अपना. Good evening, everyone. Very good evening. Sir, I will narrate the incident of our army life where the natural calamity had happened. And we have seen deaths in front of our eyes. That has shaken us badly, physically as well as emotionally. So I am narrating you the incident when we were posted at Mizoram. Far extreme and east. And that was just next to Burma. और आइजोल से भी हमें फ्लाइट लेने के बाद हमें बाय रोड, आफ्टर till Aizol there was flight. After Aizol we had to go on by road for 2 days journey, night halt. 2 days. हाँ, 2 days. Can you imagine? और वो सारे रोड्स ऐसे हैं, hills, jungles, बुरे हाल हमारे हो जाते थे जब हम पहुंचे थे. और we were posted at Long Talai. The place is called Long Talai, next to Burma.
हाँ बिल्कुल बर्मा के साथ ही है, इतनी दूर हमारी पोस्टिंग थी। एट दैट टाइम माई चाइल्ड वॉज वेरी स्मॉल, मेरा बच्चा छोटा था, काफी पहले की बात है, 25 साल पहले की बात। तो वहाँ क्या था, ही वॉज कमांडिंग आरसीसी, आरसीसी मीन रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी, माई हस्बैंड वॉज कमांडिंग। बरसात बहुत होती थी, इट हैपेंड कि 5-6 दिन बड़ी रेन हुई, टोरेंशियल रेन। बारिश तो होती थी, पर वो बारिश इतनी अजीब, इतनी अजीब, एंड विद दैट देयर वाज अ ट्रेमर, अर्थक्वेक। और हम लोग बैठे हुए हैं, हाथ जोड़ रहे हैं किसी तरह बारिश रुक जाए, और हमारे सब कुछ फेल होता जा रहा है हमारी यूनिट का। हमें मैसेज पे मैसेज आ रहे हैं, सर ये पहाड़ी स्लिप हो गई है, सर वो पहाड़ी स्लिप हो गई है, सर ये पहाड़ी स्लिप हो गई है, सर लेबर कैंप जा रहा है, सर वो लेबर कैंप जा रहा है। कैन यू इमेजिन अवर कंडीशन इमोशनली? और जिस घर में हम पहाड़ी के ऊपर बैठे थे ना, बच्चे को लेके मैं ऐसे बैठी थी, इतनी हवा थी, इतनी हवा थी, उसकी छत सर ऐसे हो रही थी। इससे ज्यादा बुरा आप क्या देख सकते हो कि अब हमारा नंबर आने वाला है, और सारे यूनिट्स की लाइट खत्म। नो यूनिट क्या, पूरे टाउन की, नो लाइट्स, नो वाटर, टेलीफोन कनेक्शन सारे ऑफ। देन थोड़ी सी बारिश हुई, कम हुई, देन माय हस्बैंड डिसाइडेड, आई एम द I am commanding the unit, I will go on foot to my headquarters, which was 40 kilometers away from the location where we were posted. तो सर उस टाइम तक सारी रोड्स खत्म, पूरे के पूरे कंक्रीट घर देवर ऐसे टिल्टेड, पूरा ज्योग्राफी वाज चेंज्ड। गाड़ी तो चलने का सवाल ही नहीं पैदा होता था, पैदल चलने के लिए भी रास्ता सोचना पड़ता था, कहीं हम खाई में तो नहीं गिर जाएंगे। सो माय हस्बैंड विद टीम ऑफ 4 and 5 जवान्स, ही वेंट ऑन फुट 40 किलोमीटर उस स्लश में चल के गए। My jawans are not having food, my jawans are not having water, my jawans are not having electricity, do something. And my जो लेबर कैंप्स थे वो स्लाइड हो गए हैं। हमने उनको काफी को बचाने की कोशिश करी है, बट फिर भी वो ना स्लाइड्स के साथ स्लिप हो गए हैं। आई कैन नॉट एक्सप्लेन यू जो नजारा था वहां, मेरे पास पिक्चर्स नहीं है अभी, नहीं तो मैं आपको दिखाती। और चलो धीरे धीरे बारिश कम हुई, लेकिन उसका हमारे ना इमोशनली इतना सेटबैक हुआ, सब कुछ देख के, सब कुछ देख के। फिर उसके बाद क्या हुआ, बीमारी फैल गई। बीमारी कौन सी फैली, इतना वाटर लॉगिंग हो गया था, इतना वाटर लॉगिंग, मलेरिया, उस साइड में मलेरिया बहुत है, मॉस्किटोज, इतने मॉस्किटोज की समझ में नहीं आ रही थी अपने आप को कैसे बचाएं। जवान तो बीमार हुए, फैमिलीज बीमार हुई, डेथ्स हुई, और मेरे हस्बैंड को भी मलेरिया, मेरे को भी मलेरिया। वी वर इन बैड कंडीशन, देयर वाज नो गुड हॉस्पिटल, और हमें ड्रिप लग रहे हैं, हम हॉस्पिटल में हैं, बच्चा छोटा सा साथ है। सो मतलब डेथ को बड़े पास से हमने देखा है, बहुत पास से देखा है। उसके बाद चलो धीरे धीरे धीरे, बट वो सिचुएशन वापस नहीं आई। देन आफ्टर 2 months ये सारे इन्होंने लगे रहे, ये लोग सारे टेम्परेरी रोड्स पहाड़ों को काट के, कि गाड़ियां जो ना, हेडक्वार्टर जहां था ना, वहां इतना बुरा हाल नहीं हुआ क्योंकि यहाँ ट्रेमर था, वहां तक रोड के कंटैक्ट्स थे, यहाँ हमारे रोड के कंटैक्ट्स ही टूट गए थे। फिर धीरे धीरे वो रोड थोड़े थोड़े का पहाड़ काट के डोजर्स ही डोजर्स रोड पे किसी तरह कुछ राशन पहुंचना हमारे पास शुरू हुआ। तो ये मैं इंसिडेंट जब भी सोचती हूँ ना, मैं तो कांप उठती हूँ कि हमने शायद कुछ अच्छे कर्म किए हुए थे कि हम लोग बच के वहां से वापस आ गए, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाना था। तो ये ट्रॉमा, ये फौज ना बड़ा कुछ सिखाती है। बड़े ऐसे इंसिडेंट्स हमने अपनी लाइफ में देखे हैं जब ऐसे टफ एरियाज में हमारी पोस्टिंग होती है। तो मेरे को लगता है सिविल में यू पीपल कैन नॉट इमेजिन, No, we can't. We have not seen something like this. यू हैव नॉट सीन सच थिंग। तो मतलब इससे तक पता क्या होता, हम में बड़ी पॉजिटिविटी, बीइंग देखो आर्मी ऑफिसर वाइफ, अब मैं किसी चीज से डरती नहीं।
इसमें बड़ी पॉजिटिविटी आ जाती है, ब्रेव भी हम हो जाते हैं कि हमारे हस्बैंड्स ने इतनी ऐसी सिचुएशन, मैं हैरान हो रही हूँ अपने हस्बैंड पे, कैसे वो 40 किलोमीटर चल के गए और आप वापिस आके ऐसे खड़े हो गए मेरे सामने ही वाज स्टैंडिंग एंड आई वाज वेटिंग 2 दिन लग गए, 3 दिन, तीसरे दिन आए, कुछ भी नहीं, यूनिफॉर्म खराब हुई है, सब टर्बन पहना हुआ है, यूनिफॉर्म खराब है, शूज कीचड़ से भरे हुए हैं, एंड वो कोई हाल ही नहीं थे कि वो अपना सामान लेके जा सके कि सर नहीं, मैंने अपनी सिचुएशन बताने जाना, दिस इज द प्रॉब्लम, मैंने वहां से फोन करवाने हैं कि हमारा कुछ करो। सो सर ये इंसिडेंट्स भूलते नहीं है, बड़ा नहीं, बहुत टफ लाइफ। तो इनसे हम बड़ा कुछ सीखते भी हैं, हम लोग पॉजिटिव हो गए, ब्रेव, ये भगवान का शुक्र है यार, इसमें बहुत लर्निंग आता है, किस तरह से हेल्प करी एक दूसरे की, पकड़ पकड़ के जाके फैमिलीज को मॉरल सपोर्ट, बहुत बहुत मतलब कि भयानक इंसिडेंट लाइफ में ये मेरे हुआ, सामने देख रहे हैं। हाँ सर, सो इमोशनली भी बहुत हुआ, फिजिकली हम बीमार पड़ गए, इमोशनली तो मैं तो अभी भी याद करती हूँ ना, आई बिकम वेरी मैं कहती हूँ शुक्र है ये सब खत्म हुआ, ये सब देखा नहीं जाता। सो सर मेरा ये लाइफ का एक्सपीरियंस, और भी बहुत है ऐसे एक्सपीरियंस, आई वुड लाइक टू शेयर जस्ट वन, क्योंकि सबको टाइम मिले। very the learning that one gets out of such experiences is immense. तो लाइफ पॉजिटिव हो मतलब जाता है। हाँ पॉजिटिव तो हो जाता, इंसान सोचता अरे क्या क्या हो सकता है, और भी गम है जमाने में या मोहब्बत के सिवा। बिल्कुल। Anyway, thank you Manindra ji, that was very close to heart wrenching. Touching, yeah. बिल्कुल Maninder, I can understand because my father also was in the Indian Air Force and Okay. many nephews are in the army and he was in the border actually, you know, वहाँ पे जो fighting होता है, he was just in the border, he has seen deaths, just पास में deaths देखे हैं उसने. Yeah, I can understand what all you went through. Yeah, very tough. Anyway, thank you so much Manindra ji. सुन के कुछ प्रोत्साहन भी मिला इसमें. While it was very harsh, but there is so much of learning coming out of that. Thank you so much. Now, a couple of people are still left. A lot of people had to leave कुछ ना कुछ कारण से. गोपीचंद जी हैं. गोपीचंद जी, आप कुछ शेयर करना चाहेंगे अपना पर्सनल लाइफ का जो प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक्सपीरियंस आपका? आप अनम्यूट कर लीजिए. हेलो गणपत चंद जी, आप अनम्यूट कर लीजिए. हाँ जी, बस मैं तो सुन रहा था. आप सुन रहे थे? नहीं, आपको भी कुछ नहीं, बोलना है? अभी तो कुछ नहीं करना है. अच्छा, कोई बात नहीं. धन्यवाद. So I will check with. Okay, thank you. Okay. Kalpana ji, you have anything to share about any kind of challenge, problem that you encountered and how it was resolved? First time attend किया, सुन रहे हैं सबके. Thank you. अच्छा, आप सुन नहीं रही हैं. चलिए. Thank you. Okay. I think डॉली जी का है, एडमिन करके दिखता है. डॉली जी शायद जगह पे नहीं है. Okay, I think she's probably got. So yes, so sir. We see that people do encounter very serious problems. Precisely. And they have come out successfully, which is something that gives us some moral boost. You know, it is not as though that a problem can come and hit you and break you into pieces. It's not like that. The worst thing happens and people come out of it and have a story to tell about that problem. Now, that problem has now become a point for us, a very interesting story, with a very deep-rooted moral in it, that no problems are worth worrying too much about. But yeah, I would like to say
that there are certain ways to deal with problems per se. One is to avoid problems. This is particularly true here for Miss Jayalakshmi here, because if she has a capacity to just fall, that's very bad, because well, that is where people say whatever you do, that is everything very normal, routine, humdrum things also. Do with your full attention. This is totally awareness is something very important. I am glad to tell you, and I am aged 85. Have slipped and fell 2 times, not because of my fault. It was because of a very slippery patch of road, which I didn't anticipate. Put my heel and slipped and fell. Fortunately, nothing serious happened. I have not undergone any fracture so far. Never been to a hospital for any treatment for bone issues. Contrary to this, my wife has undergone 7 fractures. Here, there, everywhere. No, so one way to deal with problems is to foresee the possible problems and avoid them completely. And once we are into the problem, now we have to analyze. There are people who say that the solution to the problem lies in the problem itself. There is one Tirukural saying, Noi nadi, noi mudal nadi, matadan vai nadi, vaipa kulal. This is Tamil, it will be a mystery to everybody. But what it means is, you understand the sickness, you understand the source of the sickness, and you understand the nature of the source, and then do what is required. This is a maxim for life, as let us say. So you have to understand the source of some things we cannot help. We cannot help sudden illnesses. We cannot help unexpected deaths. We cannot help natural disasters. There are so many things. But the thing is, it is no good preaching that everything will pass. You have a positive attitude. Any number of positive attitude is not going to move this bottle 1 inch without some force acting on it. True. No, positive thinking has its own limitations. Anyway, if you have the grit, that is what army people have. Yeah. You know, in face of imminent death, they don't lose their cool. They are prepared to do and take whatever action is to be taken. That is called true grit. True grit is also the title of a famous English film, I think. Yeah. I don't remember this. So, to deal with the problems with the grit, that is one thing. Incidentally, personal problems. Speaking of problems, I would like to recite to you, they were small compared to all other friends. My story is going to be very insignificant. You see, I had an Airtel internet connection. At one point of time, I stopped that connection. Then they were pestering me, saying that you should take it back. We will give you another connection for 1,500 per month. This, that, the commercial talk that goes on. I told them, sir, I am out of Chennai for the time being. I will be there back to Chennai only in 2 months' time. I will contact you, then you can give me the connection. Now I don't want it. You know what happened? Airtel, being the famous company they have, after 2 months, they started billing me as though I have taken the connection. Not only they started billing me, they started taking money from my bank. Automatic clearing system, electronic clearing system. A mandate was with them for the previous connection, which they used to take money from my account every month. Something like 1,300, this, that, GST and all that. I fought and fought. I phoned the every Tom, Dick and Harry. They would not listen at all. Then you know what happened? I had the good fortune to speak to a manager after 3 months of persistent calls and pestering. I told them a lie. I told them, sir, now we have a government headed by Mr. Karunanidhi, DMK chief. He is very inimical
to all North Indian entrepreneurs. I am going to make a complaint with my political connection, and he will say, take action against you, which you will regret. You either set right my thing or else. That is what I told. And suddenly the money came back. All the money recovered from me has been returned. You see, sometimes even lying is also a problem. That is the interesting story I had to share. Thank you. That was really interesting. I mean, the way, different ways of resolving an issue, but not the most elegant way, but nevertheless, it was a result-oriented way. Not a very honest way, definitely. Right. It was a green lie. If you had called me a bluff, I would be nowhere, you know. But anyway, that worked and I got my money back. That is the interesting thing. In other words, what is yours will remain yours. So you will anyway get it. If it was not yours anyway, that we can say only in hindsight. When it comes back, we say it is my hard-earned money. I won't lose it. Yes, that is true. But there are instances when you lose money, even if it is hard-earned, still money goes. There is always there. There is no, in point of fact, there is no golden truth. All truths have their shades of gray. I have completely reconciled myself saying that it was not mine. Yeah, that is the best way to. Having lost a lot, there is no point in losing sleep. That it was not mine. Chhod do. That is one way of problem solving, you know. Run away from the problem. Because you can't do anything about it. It's gone. Good. Yeah. Kalpana said no. Dolly is still there. So if she has anything to say. And then I think Sneha Prabha is just about joined. Emotional problems, I think they are best solved by sitting quietly and meditating and not thinking about it if possible. And with the passage of time, all emotional problems come to an end. As for financial problems, we either borrow the money or change some assets. Gold in the house or a house itself or a second house for that matter. Whatever can be converted into money, you can convert and deal with your family. Beyond that, there is nothing. You can either borrow or sell your assets. That is all. Only two options. Liquidate. Yeah. That is fine. For physical options, you either go to a homeopath, naturopath, Ayurvedic, or allopathy. Only 4 solutions. And curtail your expenditures. Curtail your expenditures. Yeah, that is as much as you can. There still. Yeah, that is one way. I think we can have a separate session on how we deal with financial problems. Financial burdens. I mean, yeah. I mean, in Kannada we say ಚಾಪೆ ಇರೋ ಅಷ್ಟು ಕಾಲ್ ಚಾಚು ಅಂದ್ರೆ if you have 100 rupees you stay according to that. If you get more money, stay according to that, and in that also you can save at least 100 rupees, at least 2 rupees you can save. Take care of the pennies and the pounds will take care of themselves. Yeah, Hindi में they say ना टांग उतना ही फैलो जितना बड़ा चद्दर हो या something to that effect. That is in Kannada is the same thing. Yeah, something similar. Yeah. In Tamil also they say. You can be happy with 100 rupees also. You can be, same happiness you can get in less money also, I feel. Varavu etana, selavu patana. There is a song saying, you earn 8 annas, you spend 10 annas, your shortfall is 2 annas, and at last you will go begging. Yeah. That is all. They say you become rich the way how much, not because of how much you earn, but by how much you save. Yeah. So I think I'm not a finance person, so we will need someone to talk about that, how you can manage it. So good. And I think recently one session conducted by Yellow or something on will, making of will. It was a very interesting one. Okay. Which is also a very important aspect of our lives. Yes, we should complete that task. Everybody listens and nobody writes a will. That is the truth. No, I have done. I see. Yes, that's that you are singular, unparalleled. I will say. But why you should write will, Lax? Like, like wife is there,
then children, it will pass on like that, no? Or is it? That is what we all think, if every document is in place, it is easier. Otherwise, if there is a stakeholder who comes in suddenly, one of your cousins Yeah, says that, very true. oh, that It is has happened. ancestral, and so it is Yeah, not. It is safer to do it. yeah, I have faced problems in that way also, because when my husband passed away, he had not put any nominee, and people in the bank knew that I'm his wife. Everybody knows, but they said, "Nay, we know new wife ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಆದ್ರೆ document ಇಲ್ಲ, we can't do anything." See, that is why they I brought in that faced concept of KYC. yeah. KYC formalities have to be filled up completely for any bank account, so that who is the Uh, nominee is clear. Nowadays, bank It insists is, on a nominee. yeah. If you don't have a nominee, they point out that you don't Before have it was not not nominee. there, I See, think. my only problem with the session, I have my will is a very generic one. I have not detailed it with the assets that I have or the bank accounts that I have. I have only very, I mean, at least my fund managers have suggested that, okay, it's a generic one. Whatever is there, if you are the first one to go, it will go to your wife. If he is the first one, it will come to you. And if both are gone, it will go to your children, 50% each. Two children I have. So It is this is what understood. it is. But you have to register it in certain. Yeah. It's not. No, as per law, even the unregistered bill is valid. If It is if valid, nobody, sir, but you have to face a lot of problems when Yeah, it comes then to they really told me, executing. bank So, people told me you can get it. You have to yeah, take signatures from his brother's children, this and no that. objection Who is going? certificate, My and a children lot said, of things leave are it. there. Let jane do. Who is going to go to Saudi no, Arabia? that is all these complications arise when it deals with an ancestral property. I inherit something from my father, And he has and 7 this brothers. property, my brother has a right over it because it is my father's But property. they told Otherwise, if it is self-earned, That, there will be that no is the problem. same thing will happen if tomorrow I am gone. Both the children, I have written that both the children will get 50% each. But if I have not done that, it could be, there would maybe a custodian, then who will act. So a lot of things are there. It is better to have it done and also register it. Because in places like Mumbai, I don't know, and Delhi or a couple of places, without registration, it has no value. And you have to have a succession certificate if the house is in the name of so and so and then he passes away. And then, because we have gone through recently some pains in this area amongst our relatives, so yeah. that is the reason I was very keen to attend that session and also get these things. So today morning also I had a call with my fund managers, and then they are working on clearing up registration related things. I said, looks like registration is mandatory, because so that things will be smooth for the gen next. They should not be, see, they're all having their own I have lives. I have a recent case in our family where there was somebody died with a heavy bank balance without leaving any will or anything. But he had nominated some X to his bank account. The X was able to get all the bank money. That is thankfully There was because no it is problem at all. because of the KYC thing, which became a mandatory Yeah. thing. So if Earlier you it was have not. nominated anybody to your savings, your funds, your stocks, or whatever, then mostly there is no problem. And all problems arise only when legal heirs have a quarrel between themselves. Yeah. Otherwise, there will be no problem. Also, if there is some skeleton in the cupboard, somebody suddenly comes and staking a claim that I am also eligible for Yeah. this I am property. also his son. That No, happens in Huh? serials. Jayalakshmi will be able to tell us about it. No, It is yeah, a serial. I remember some incident like say, like Suraya, she had lot of property, Suraya, the actress, the singer. So Naushad, it seems one day asked her, तुमने कुछ लिखा है, will कुछ लिखा है? Then she said, नहीं लिखेंगे बाद में लिखेंगे. But she never made any will, and she passed away. So much of property, no will, nothing. So all relatives कहाँ से आ गए? It seems मैं इनकी ये हूँ. I'm connected to her. But I don't know then what happened. But the government took off the property, like even the Devika Rani's See, case that is is what also, happens, no? yeah.
Devika Rani, that see the movie Annadata. So I think it's an important thing. Yeah. So I will very strongly recommend that. Please do it. More recently, there is one lady who claims to be a daughter of Jayalalitha. चलो ये भी होता है, ये भी होता है, ऐसा भी होता है मस्त। ऐसा भी हो जाएगा, पैसा आएगा तो ये सब हो जाएगा। Thank you very much, all of you, for ऐसा being है there. तो ऐसा. So, food for thought. Any of you can suggest topics for the coming weeks, and we will see what can be. Like Raman sir said last week, why don't we do this? And so we have done it. So, anyone has any idea, any topic, please share with Firoz, and then we can take it further. So, thank you so Thank much, you, and we'll thank meet you you. again the following next week on Thank you Tuesday. to everybody. Bye to all. Bye. Thank you, sir. Thanks a lot. Thanks. और Good night. अच्छा Thank you. Bye. Take care, We Santosh. Take we care. would like it. We would like everybody Bye. to speak. We would like every participant to speak on something or other related to the topic. Yeah. We request them to come and participate apart from hearing. Preferably join Yeah. right in the beginning so that they have the full context. Many of them मैं just तो come कोई and हर बार बोलती थी I was trying to be on the back seat, फिर लगा कि अभी हाँ so I think जो अगर और volunteers आते हैं तो जो बोल रहे हैं वो they can always take a back seat. I mean, like yeah, that is true. Maybe like I think I should speak after everybody. Then पता नहीं क्यों I want to speak. मैं हाथ उठा देती हूँ. नहीं लेकिन दूसरे कोई बात नहीं मतलब पर लगता है जब अभी कोई नहीं है then to keep it alive session. Yeah. That also is a good strategy because I don't know, some people are earmarked, who will speak. Like some of us here are known that okay, ये बात करेंगे, ये करेंगे. So much so today the afternoon session of food, I have absolutely no, but I was the first one asked, कि what did you think of it, so I know. बकबक करने की आदत जो है. I want to speak like yeah. चलिए, thank you all.